अपने ऑसम आइडियाज को कन्वर्ट कर सकते हो रियल प्रोडक्ट में बिना कोडिंग किए हुए। दैट इज पॉसिबल बाय लवेबल। व्हाट इज लवेबल? एक एआई पावर नो कोड प्लेटफॉर्म है जो आपकी आइडियाज को वर्किंग वेब ऐप में कन्वर्ट करता है। आपको बस बताना होगा कि आपको क्या चाहिए और एआई आपको बना के देगा फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस, और उसके से रिव्यू कर सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो। सो अब बात करते हैं कि लवेबल कैसे काम करता है। फर्स्टली यू हैव टू बी क्रिएट अ अकाउंट ऑन अ लवेबल बाय डूइंग अ साइन अप। आफ्टर साइनिंग जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे। आपको लवेबल पूरा एंड टू एंड एक पूरा होल साइट बना के दे रहा होगा। Make sure you will be hit the like button, share and subscribe my channel for this type of amazing video and let's talk about it. मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पुट आउट किया है, just build me a subscription ROI tracker app, so dashboard with a total monthly spend and subscription name, pricing, renewal dates, category and reminder page. So this is a prompt that I will be giving here, okay, right now, कि मुझे एक सब्सक्रिप्शन ROI ट्रैकर ऐप बनाना है। भी क्लिक ऑन द, आप यहाँ पे प्लस साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं कोई भी फाइल को, या कोई भी आपके पास डिज़ाइन है उसको, या आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस को या MCP सर्वर, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स को, या यहाँ से आप कोई भी कनेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं by clicking on manage connector, okay. And so coming to be a next step, आप यहाँ पे build पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से प्लान मोड पे आपको ऑन करना होगा। अब प्लान मोड ऑन करने पे स्ट्रक्चर पहले आप रिव्यू कर सकते हो, और जब आप बिल्ड मोड पे रहता है एआई तुरंत आपको वेबसाइट बना के दे देगा। यूज अ प्लान मोड ताकि आप आर्किटेक्चर को वेरीफाई कर सकें। सो आई एम राइट नाउ क्लिकिंग ऑन दिस अप एंटर। उसके बाद आपको ये थोड़ा थॉटफुलनेस बताएगा कि पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म आउट में टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर, and based on this they will be built out, okay, your app. So this is a questions it will be asked, you should be skip these questions, yeah, you should be submit these questions, okay, I will be submitting these questions. Site will be coming here, और आप अपने यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो अपने साइट को, और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ये आपको बना के प्लान ट्रैकर पहले बना के दे रहा है। You want to be review the plan tracker, so just we review it the plan tracker कि what is it will be making. So these are the main features of dashboard made on सब ट्रैकर पेज नेविगेट करने के लिए बनाया गया है। सो आप इसको रिव्यू कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें एडिट करना चाहते हो, अपने फॉर्म आउट में एडिट करना चाहते हो, कुछ भी प्लान्स में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकती हो। नो देन यू वांट टू बी अप्रूव इट, देन ओके, जस्ट अप्रूव इट। Files here firstly, okay, setting up the design system and data layers, okay, it will be takes a time to build up this, okay, but तो lovable convert करके देगा आपको एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट में। दिख रहे होंगे यूआई के बेसिस दिख रहे होंगे, बैकएंड एंड डेटाबेस कैसे वर्क कर रहा है, फिर ऑथेंटिकेशन कैसे क्रिएट कर रहे होगे, इसमें वर्किंग ऐप रिव्यू कर सकते हो यहाँ से विथ नो कोड के साथ। This is a sub tracker, it will be generated. It's look like a very minimum design or UI design right now, okay. To do a very authenticate design by using it, you can check the subscription of gym membership, Netflix, Spotify, AWS, Notion, Coursera Plus, okay, for entertainment, for productivity, for finance. You can add it for cloud purpose. You can add a subscription by here, just here, creating your own subscription. Here it is a reminder, it will be gives you all type, and this is a dashboard totally look like. So coming to be a next step, so this is a prompt that I have given here
to change the UI, okay, of this website similar to the link of that website. So this is a website. I want to create a similar UI for my website. So just give the link, copy the link of this website to here, and I written a prompt here. Make the UI look like a clean minimalistic fintech dashboard using the style of this page as a reference. So I paste here my link here and just enter this. It will be designing a pattern here based on this site. Be making a redesign theme based on the fintech style that I'm given here, okay, and look like this format. This is a whole UI it will be given here, okay. Just you can do a similar things with any of the website that you want, okay. By using a visual edit, you can edit the text elements, font size, font style, background, text color of this whole website, okay. Just you have to be go and click anywhere in this site and you just edit this, okay. Division, then it will be give you whole visual edit here. You go and add it here. Just I want to be added a bordered 4 pixel. You want to add it any border style, none of the border style I want to be do, change it, okay. You want to add it any color here, so just it gives to you color. Just I want to add it a red color to show the customized color. आपने जो भी एडिट किया होगा विजुअल एडिट में वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू करने के लिए मिल जाएगा और आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो. So latest preview is already here. It will be updated all the things. नेक्स्ट आप बात करते हैं, कोई भी आप न्यू सब्सक्रिप्शन को ऐड करते हो तो आपका वो सब्सक्रिप्शन डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है. तो डेटा वो जाके स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में. योर डेटा ऑन अ डेटाबेस, बिकॉज आप जब भी इस साइट को ऑफ भी कर दोगे तो आपका डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर रहेगा. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हियर इट विल बी गिवन. मुझे चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ऐड करना है तो आई विल बी क्लिक ऑन ऐड सब्सक्रिप्शन. लेट वी राइट हियर चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन, price is 399. I will be want a monthly billing cycle. It will category in another side because it is a chat gpt prompt. I will be add the date also from here. Just let me take the date. It will be inspired on date on 29, renewal date, okay. You can be add any notes here. I'm just not adding any notes and click on add. सो हियर यू शुड बी लुक हियर, चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया है. मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाला है कि ऐड करना है यहाँ पे यूजर अकाउंट, ईमेल, साइन अप और लॉगिन का, और इंश्योर ईच यूजर्स कैन ओनली सी देयर सब्सक्रिप्शन डेटा and save all the data to the database so it doesn't disappear when the browser is closed. So go and click here. So it will be authentication and data isolation, it will be creating right now. डेटाबेस यहाँ पे जो क्रिएट किया गया है इस वेबसाइट के लिए, इस सब्सक्रिप्शन ऐप के लिए, उस पर आप क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, कर्ड का यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट आई वांट टू बी क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट. sign up. Firstly I'm doing the sign up and you can check your email also. Information email is also come up in my email id, okay. So verify this email. इन करने के बाद आप इसने साइनिंग और साइन आउट बटन क्रिएट किया. ईमेल एड्रेस से मैंने यहाँ पे साइन इन किया है, तो डेटाबेस क्रिएट किया. सो इट विल बी लुकिंग ऑल द थिंग्स, monthly spend, annual spending, active submission, top category, all things looking like a zero because ये अभी न्यू डेटाबेस पे क्रिएट हुआ है. थिंग्स विल नॉट बी हियर.
I will be creating an 2 to 3 subscription. अब यहाँ पे 3 सब्सक्रिप्शन ट्रैक करने के लिए बेस पे मैंने यहाँ पे डाला है. So looking on dashboard side, so the dashboard is also updated here. Active subscription right now is currently 3. Top categories, cloud का subscription is very high subscription I have taken. ईमेल डाल के और पासवर्ड डाल के मैं देखना चाहूँगी कि मेरे जो ईमेल में वो तीनों सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है कि नहीं है, या उस डेटाबेस में स्टोर किया है कि नहीं किया है. So just I go through my email and give the password here and look here. It will be available right now, okay, and the data in database, it will be stored there, okay. You can check the subscription also. The subscription will be available based on it. Reminder will be also on here in 3 button. You check the cloud part from here, okay, by going in a database, you know. So this of the 3 subscription row have created here, or you can view this subscription from here, okay, in database. So these are the ID and subscription names, price, billing cycle, categories, renewable dates will be created here, and you can check the database from here, okay. Storage. सो आप देखना चाहते हो कि डेटाबेस में स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप साइन इन करके अगेन देख सकते हो. जस्ट मैंने फर्स्ट मेथड बताया. सेकंड मेथड है कि आप इस पे क्लिक करोगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे. जस्ट आपको क्लाउड पे जाना है और क्लाउड पे जाके आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 सब्सक्रिप्शन रोज यहाँ पे फॉर्म आउट हो चुके हैं. This website I want to be add a AI assistant, so I given there this a prompt here. Just I want to be able to type any English, plain English in that AI assistant mode, and they will be convert into the list of subscription. So let's click on the prompt here. They will be start here to making it, okay. It will be created a AI assistant here in simple text like mid journey 30-month subscription. You have to be enter it. So this will be added a mid journey $30 subscription here. We will be make the list of this mid journey here to make your site very user friendly. And you can publish your website easily from here, okay. Just you have to click on publish button. This website is also the live, so the whole things as I am created. Now it's time to be just you want to be pitch this website to the a client, make the PPT regarding that this website, okay. So or give the overview regarding this website by using a PPT. So you need a PPT to present this whole website. So Lovable can do that things also, and you don't have to be go another website. मैंने यहाँ पे एक prompt डाला है कि create a PowerPoint pitch deck for this app and include a problem slide. As a freelancer, lose the money on a unused subscription and make a solution slide. Give a prompt and how this website will be very useful for in market. So just go and click enter and look how this will be making, okay. It will be created a PowerPoint pitch just here, and you directly download it from here. Click on download button. Make sure you will be hitting like button, share and subscribe my channel for this type of amazing video.